Assalamualaikum, this is Hussein and I welcome you to our channel Science with Hussein Sir। आज के इस सेशन में हम मोस्ट रिपीटेड PYQ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में हम जो PYQ डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं कंसेप्ट और क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार सीटेट में पूछा जाता है। तो ये सेशन सीटेट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड? एंड ऑप्शंस आर formation of curd, baking of bread, fermentation of sugar juice, nitrogen fixation। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑप्शन 4, यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया यूज होता है। तो ये क्या होगा, एक बैक्टीरियल प्रोसेस है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जूस, ये भी क्या एक बैक्टीरियल प्रोसेस है, इसके अंदर भी बैक्टीरिया यूज होता है। एंड ऑप्शन 1 इज formation of curd, it is also a bacterial process. We required bacteria to convert milk into curd and the name of bacteria is lactobacillus। Now option second, बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर ईस्ट का यूज होता है, ईस्ट, और ईस्ट क्या है, एक फंगस है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी, दैट इज बेकिंग ऑफ ब्रेड, विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is different from the rest? And options are deforestation, desertification, erosion and conservation। Deforestation, desertification and erosion, all these are destructive process, and conservation, that is option 4, it is used to protect environment। Okay, so for this particular question option 4, that is conservation, will be correct over here। Question number 3 है, which of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बताना है। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन केमिकल चेंज है, वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज होगा। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, तो क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 4, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, विल बी करेक्ट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following represent ascending order as per the size of particles? And options are rock, clay, sand, gravel, silt। clay, silt, sand, gravel, rock। silt, clay, sand, gravel, rock, gravel, sand, silt and clay। सो इन पार्टिकल के साइज की अपन बात करें तो इनका ऑर्डर होगा clay, then silt, then sand, then gravel, then rock। सो ये असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। सो ये सीक्वेंस मैच हो रही है ऑप्शन 2 से, दैट इज क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड रॉक। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 2, दैट इज क्ले, सिल्ट, सैंड, gravel and rock will be correct over here। Next question is, the function of gill in the fish is to, and options are take oxygen from air, absorb nutrient present in water, absorb dissolved oxygen from water and excrete waste into water। So function of gill in fish क्या होता है, function of gill in fish to absorb dissolved oxygen from water, ठीक है। So for this particular question option 3 will be correct over here। Now next option is, which of the following can be used to complete electric circuit if one run out of connecting wire? And options are a paper strip, a wood stick, a rubber belt, a blade। तो यहाँ पर पेपर, rubber and wood, all these three are insulator। insulator means non conductor of electricity। जबकि ब्लेड की बात करें अपन तो ब्लेड जनरली बना होता है मेटल से, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 4, दैट इज अ ब्लेड विल बी used to complete the circuit as it shows the conductivity। So for this particular question option 4 will be correct over here। Question number 7 है, Manjula is observing her image in the plane mirror, the distance between herself and mirror is 5 meter। She move 1 meter towards the mirror, the distance between herself and mirror image now is, and options are 1 meter, 4 meter, 8 meter and 10 meter। So according to question कोई गर्ल्स है मंजुला,
और इसका डिस्टेंस प्लेन मिरर से 5 मीटर है। ओके, 5 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी हुई है प्लेन से। अब प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वहाँ पर इसका इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। मतलब अगर मंजुला 5 मीटर दूरी पर खड़ी है मिरर से, तो 5 मीटर डिस्टेंस पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मतलब अंदर भी, मिरर के अंदर भी 5 मीटर दूरी पर इसकी इमेज बनी। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका मंजुला का फ्रॉम हर इमेज विल बी 10 मीटर। 10 मीटर इसका हो जाएगा, यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग 1 मीटर मूव करती है टुवर्ड्स द मिरर, सो नाउ इट्स 5 माइनस 1 यानी 4 मीटर। और यहाँ पर भी इमेज जो मूव करेगी 1 मीटर टुवर्ड्स मिरर मूव करेगी इमेज, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर। नाउ 4 + 4 8. So the distance between Manjula and her image after moving 1 meter toward the mirror will be 8 meter. So for this particular question, option third, that is 8 meter, will be correct over here. Question is, a pendulum oscillates 30 times in 3 seconds. Choose the correct statement from the following. And options are, its time period is 10 seconds and frequency is 3 seconds. Time period is 0.1 second and frequency is 10 hertz. Option third, its time period is 10 seconds and frequency is 0.3 hertz. Option 4, its time period is 0.3 second and frequency is 0.3 second. Now frequency will be equals to number of oscillation upon time. दिया हुआ है 30 oscillation and time दिया हुआ है 3 seconds. So 30/3 will be 10. So 10. Now what is the relation between time period and frequency? So time period is 1 by frequency. Time period is equals to 1 by frequency. So according to this formula, 1 by 10, that is 0.1 सेकंड। और निकल कर आया यहाँ पे 0.1 सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 10 हर्ट्ज। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ। सेकंड इज, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ ऑप्शन 4 इज, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। तो यहाँ पे जो बॉल बेरिंग है, बॉल बेरिंग इट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन between the parts of machine. Okay, so for this particular question, option A will be correct over here. Which of the following statement is are correct? First is, iron can replace zinc from zinc sulfate solution. Zinc can replace copper from copper sulfate solution. Copper can replace iron from iron sulfate solution. So this question is based on displacement reaction, and displacement reaction को समझने के लिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल समझना जरूरी है। तो यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन तो यहाँ पे जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो ये तो नहीं हो सकता, जिंक आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है कि जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ फ्रॉम आयरन सल्फेट, तो आयरन कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर क्या लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, सो ओनली स्टेटमेंट बी विल बी करेक्ट ओवर हियर। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी, दैट इज ओनली बी विल बी करेक्ट ओवर हियर। स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, ऑप्शन मीटर कैन यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। ये गलत स्टेटमेंट है। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज किया जाता है। नाउ सेकंड ऑप्शन इज, रूम थर्मामीटर हैव रेंज फ्रॉम 30 to 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर थर्ड है, लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव रेंज फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। एंड फोर्थ ऑप्शन है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्लिनिकल थर्मामीटर से क्या होती है, रेंज ज्यादा होती है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट ओवर हियर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is are correct regarding the image formation in a plane mirror?
प्लेन मिरर में कौन सा टाइप की इमेज बनेगी वो बताना है आपको। एंड ऑप्शन ए दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है इरेक्ट इमेज बनेगी, प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज बनेगी, रियल बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनेगी प्लेन मिरर में, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी एंड सेम साइज की इमेज बनेगी। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ए, सी एंड डी will be correct over here. So ACD is given in option B. So for this particular question, option B will be correct over here. Now next question is, which of the following statement are correct? And first statement is, Pashmina shawl is made from hair of goat. Second statement is, Angora is a type of wool obtained from rabbit. Okay, and third statement is, camel wool is used to make carpet. And statement fourth is, Pashmina wool is obtained from rabbit. Made from hair of goat, this is correct statement, ये correct statement है. And camel wool is used to make carpet, ये भी एक correct statement है. So for this particular question, option A, that is A and C will be correct over here. Next question है, identify the animal on the basis of feature listed below. कुछ फीचर्स दिए हुए एनिमल्स के, उनके बेसिस पर एनिमल को पहचानना है. एंड फर्स्ट फीचर इज लॉन्ग बैकबोन, सेकंड फीचर इज मेनी मसल्स, एंड थर्ड फीचर इज बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स फॉर मूविंग टुवर्ड्स, सो फॉर मूविंग फॉरवर्ड्स. ओके, एंड ऑप्शंस आर स्नैक्स, अर्थवर्म, स्नेल्स एंड हुकवर्म्स. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हो गए? स्नेक के हो गए. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन ए, दैट इज स्नेक, विल बी करेक्ट ओवर हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑल आर्टरीज कैरी oxygen rich blood. Second option, all arteries carries oxygen from heart to other parts. Option third, arteries have thick wall. And option four, arteries have elastic wall. So यहाँ पर ऑप्शन ए, दैट इज ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये क्या है आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है. यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है पल्मोनरी आर्टरीज का, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज का एक्सेप्शन है यहाँ. सो दिस आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी दिस आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम heart to lungs. So for this particular question, option A will be correct over here. Now next option is, which of the following represent correct matching order? And first कुछ यहाँ पे तो उनको पेयरिंग करना है. ओके, सो फर्स्ट है एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन विनेगर. सो ए का क्या होगा आपका यहाँ पर? फोर्थ होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट बी, लैक्टिक एसिड. बी लैक्टिक एसिड है तो बी का होगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? कर्ड में प्रेजेंट होता है. सो फर्स्ट फॉर बी. नाउ सी दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्पेनिश में प्रेजेंट होता है. सो फॉर सी मैचेस विथ सेकंड ऑप्शन. एंड थर्ड वन इज एस्कॉर्बिक एसिड. तो एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विटामिन सी. ये प्रेजेंट होगा साइट्रस फ्रूट में. सो डी के लिए यहाँ पर होगा, डी के लिए थर्ड. ओके, सो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है. ए का फोर्थ कहाँ पर है? ए का फोर्थ यहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पर ए का फोर्थ नहीं, रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर भी ए का फोर्थ नहीं, रॉन्ग होगा. यहाँ पर भी ए का फोर्थ नहीं, रॉन्ग होगा. ठीक है, बी का फर्स्ट है तो यहाँ पर बी का फर्स्ट दिया हुआ है. सी का सेकंड है यहाँ पे तो सी का सेकंड दिया हुआ है. डी का थर्ड है तो डी का थर्ड दिया हुआ है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हेयर. पर्टिकुलर चैनल पे हम सीटेट एंड टीटी एस्पिरेंट के लिए मोर रिलीवेंट एंड ऑथेंटिक साइंस कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. सो फॉर डेली साइंस क्लासेस आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं.